सुप्तेषु जाग्रति य एष सुप्तेषु जाग्रति कामं 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 कामपुरुषो पुरुषो निर्विमाणः निर्विमाणः तदेव शुक्रं तदेव शुक्रब्रह्मा तद्ब्रह्मा तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकः शतः सर्वे तदूनात्यपि कश्चन एतद्द्वैता 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 एतद्द्वैता. I now request CA Rajesh Agrawal sir to give the opening remarks. Good morning, friends. Today is fourth day and very important. Whatever provisions we know, we have to implement by filing of return. We have just gone through some provisions yesterday related to presumptive taxation and the complications in such a small sections. We never realized that presumptive taxation was also so tricky. But also filing of return is equally important, because if one mistake, this year I just share you, this year many returns related to the charitable trust filed wrongly by the SSCs or their consultants, and huge implication, crores of rupees implications. Last week one chartered accountant told me here I am fighting one case with the appeals and the revenue stake is this, and just this is because of filing of wrong return related to the charitable trust. Whole exemption was gone. Whole exemption. So this is the implication of filing wrong return. You can imagine now unnecessarily that trust has to pay pre-deposit, pay legal fees to the consultant, and mental harassment of the department. Filing of return is equally important. Just because we are filing return through software, we thought that everything is correct. But with respect to the provisions are concerned, we should take care of what provisions we are giving effect. Just like presumptive taxation, provisionally it is correct. You can choose multiple business, but practically we have just seen software does not accept it. The interpretation, what software will take and what is in actual law, we have to understand. And just we are sharing, many even students who file day-to-day income tax returns don't know what is the difference between 1 and 2. What is ITR 1 and YTR 2? Both accept salary details, both accept house property details, both accept other source detail, whatever. But what is actually use of? Because just software is automatically selecting form, we never thought of what is the difference between 1 and 2. Again, we used to calculate 234 interest in our time. But because software is calculating automatically, we don't know how to calculate interest under section 234(1)(a), B, C. So these are the effects of automation and technology. But definitely we should understand the calculations and the provisions behind each return. So thank you, Anup, for enlightening us on accepting our invitation to enlighten us on the topic precautions in return filing. And also thanks Vikas and all the participants for joining this series. Thank you. We are declaring such series for next week, and after that again next week. Do join and also convey your other colleagues in the office to join this series, because
what topics we are covering is equally important in next series also. I just share you that will be on precautions in year-end compliances. Like this is a month of March. What precaution you should take before closure of books of account for the month of March? Earlier, we can finalize these things in the month of September also while auditing. But because of GST and all online compliances, you can't do anything backdated. So better to compliance in time correctly. So the next series will be for year-end compliances and precautions with respect to the GST, income tax, accounting, company law. We will cover. The hot topic 43B(h) also get covered in income tax. Thank you. Thank you, sir. Now, I would like to introduce you all to our chief guest, CA Anup Shah, sir. He is partner with Shaha and Shah Associates is a practicing chartered accountant with post-qualification experience of more than 4 years. He is MBA from IIM Kozhikode. His core area of expertise encompasses in income tax advisory, including IT/AT and CIT appeals. His functional expertise include income tax and appeals, GST and compliance advisory, management consulting. He is content writer for Tax Guru, ISA branch newsletters, and WMTPM monthly issues. He is also co-founder of a startup, which is a website for professional collaboration and knowledge updates. Now, I would like CA Rajesh Agrawal sir to felicitate CA Anup sir. Thank you, sir. Now I would like CA Anup sir to take charge over of this session. Good morning. नहीं आवाज नहीं आ रहा. Good morning. Okay. So yes. Okay. Everyone is comfortable in English, Hindi, yes, and Marathi as well. Okay. Anyone not comfortable with Marathi? Okay. So we'll have a mix of Hindi and English. Okay. No worries. Okay. So first of all, I would thank Pune Vikasa Rajesh sir for inviting me here. It's a privilege to be on this dais podium always. Yes. And also thank you all. सुबह 7:30 आना for the lecture is quite itself challenging, but then when you're here, it shows that you're willing to learn. Yeah, and this is what we have to do. Articleship is something that you would cherish for lifetime. Yes, मैंने articleship में ये किया था इसलिए मैं आज ये कर सकता हूँ. This is what your feeling would be always if you take it very seriously. And to take it very, very seriously, you must know the concepts, the technicalities, as well as the practical approach for anything. सिर्फ theory मालूम है, like Rajesh sir said, provisions पता है, but when you want to apply it while filing your income tax return, अगर आपको वो पता नहीं है कि ये किधर क्या डालना है, then only knowing the provision is of no use. Even for advisory, it's of no use. For litigation, it's of no use. You must know what exactly is that document which the department relies on. And वो क्या है? Income tax return, right? How you file your return itself and is the only source
where a department understand what your interpretation was and how you want to disclose your income. Okay, so this part is very important. And nowadays, if you know, earlier जब हमारा time था, तो we had 2 years where we used to revise the return. अगर B-rated भी फाइल करना है तो भी 2 साल. ओके, हमारे टाइम एक ड्रॉबैक था कि एक बार B-rated रिटर्न फाइल किया तो वी कुडंट रिवाइज इट. तो तब एक प्रिकॉशन लेना था कि चलो B-rated किया है तो दैट इज वन एंड द लास्ट टाइम दैट यू विल फाइल योर रिटर्न. बट नाउ you have only 3 months or 4 months or 6 months after your due date, or to be very, very objective, 3 months before the end of the assessment year, where you can either revise your return or file a B-rated return of income tax. Yes, under section 139(4) and section 139(5). Okay. So now it's very important that you ensure जो आप कर रहे हो, that is one and the last thing. जो document चाहिए client से, you ask it, you ask your principal to get it, as the case may be. But communication is important because you do not have much time. Okay. Okay. Given said this, given the context, एक बार मुझे बताओ फर्स्ट ईयर आर्टिकल्स कितने हैं इसमें? Okay. Second year? Okay. Third year? Anyone? Probably. Okay. You are third year. Okay. So after the session, you can ask her as well कि क्या क्या difficulties होती है first year articles. Yeah. So she'll tell you every practical thing while you handle junior articles as well, because you also know how your senior articles handle you, right? How they ask you to approach the returns, how your principal would handle you. So that's very important. Okay. So with this, let us start with a very, very basic thing. Okay. I would start with what is return of income से अपने forms क्या होते हैं? What are the sections that affect filing of returns? And then we will have a practical approach where we will open a software and just understand what are the intricacies while we fill that form in any software. So I'll just show you through Winman, but it can be any software that you may use. The columns, the rows will be same, right? So we will understand that, and then we can come to end with some FAQs that we have. Like very, very simple questions that you may have or client may ask you. Just बातों में, यार ये बताना ये क्या होता है? Yeah. So as a CA student, in couple of years, in 3 years, we would have CA in front of us. Yeah. And तब you cannot say कि मैं अभी CA हुआ. When you are a CA, you are a CA. That is very important. Okay. So let's start. What is return of income? It's a prescribed form, yeah, through which the particulars of income earned by a person in a financial year and taxes paid on such income are communicated to the income tax department. Okay, nothing rocket science, very, very basic thing. The other thing, which is very important, it allows carry forward of loss and claim of refund from income tax department. अगर रिटर्न भरा नहीं तो आपको लॉस मिलेगा नहीं मिलेगा, राइट? रिफंड मिलेगा नहीं मिलेगा. Okay, so very important to file your return of income. There are different forms of return. So there are 7 forms, ITR 1 to ITR 7, where we file a return of income depending on what is the nature of income or what is the source of income. Okay. The other thing, if you have any queries beach mein, I'm happy to take it then and there. You can just raise hand and raise a query. So let us make it as interactive as possible. ये monologue नहीं होना चाहिए because there would be practical difficulties that you would have faced last year. Yes, while filing your return of income. So just at any point of time, if you think the context is right, you can ask me the question. If no, we'll have an interactive session at the end as well. So ITR 1. ITR 1, Sahaj, you call it, because it's very simple. Yeah. So is applicable to an individual who is having salary or pension income or income from house property. If you want to understand, it's or, right? It's not and. So if you have income from house property and income from salary, you have to file ITR 2 and not 1. Okay. So ITR 1
individual having salary or pension income or income from one house property or income from other sources. Yes. So if there is an income from house property, it must not be a case of brought forward losses. One thing. Second, if it's income from other sources, it must not be from lottery winnings, income from horse races, income taxable under section 115 BBDA. So all 115 sections. It has to be simple other sources ka income. Now let us move to ITR 2. Applicable to an individual or an HUF. पहला था वो इंडिविजुअल को ही applicable था. Yes, HUF cannot fill ITR 1. ITR 2 is applicable to an individual or HUF not having income chargeable to income tax under PGBP. So ITR 1 में नहीं बैठ रहा है, आपके पास बिजनेस इनकम नहीं है, तो you will be in ITR 2. If you are a HUF not having business income, you will be in ITR 2. Yes. HUF के लिए PGBP नहीं है. ITR 3 applicable to an individual or HUF who has any income chargeable to tax under head business or profession. So आपके पास बाकी sources से भी income है, but you have income from business or profession and you are an individual or a HUF, you have ITR 3. ITR 4, it's called Sugam because yesterday you would have learned about presumptive taxation, 44 AD and 44 ADA. There are other sections as well, but these are primary that we use in our daily life. So Sugam, it's applicable to individuals or HUF or partnership firms who have opted for presumptive taxation scheme under section 44 AD, ADA or 44 AE. Yes. Now ITR 5. This form can be used by firms, LLPs, AOI, okay, association of AOPs, association of persons, body of individuals, BOI, artificial juridical persons, referred to in section 231(7), cooperative societies and local authorities. So if you are a firm and you are not having any income from 44 AD, 44 ADA, it's a normal business income, then you have to file ITR 5. If you are a AOP or a BOI and कभी भरा होगा AOP BOI का रिटर्न, so there is one concept जो मैंने अभी इधर कवर नहीं किया है because it's a bit deeper and practical life में कभी आएगा. It's MMR, maximum marginal rate. So if any of the member of your AOP or BOI has income above the limit which is chargeable to tax, then you have to file your return under AOP maximum marginal rate. तो जो भी income आता है, that is taxed at maximum marginal rate, which comes something to around 33 to 35%. Exact figure मुझे याद नहीं है. So that is the case. ITR 6 applicable to companies. However, if it's a section 8 company तो क्या होगा? Okay, section 8 company बताए? Yes or no? Okay, कोई भी बताओ एक section 8 company क्या है? Simple one line. Non-profit. Yes. So if it's a section 8 company, which form would go? ITR 6 or ITR 7? लिखा है इधर. Seven. So if that company is eligible for exemption under section 11, okay, exemption under section 11 बता है? नहीं बता तो I'll just give you a context of it. For charitable trust, there is section 11, section 12 and section 13, 12A, 12AB, okay, where any public charitable trust, right, which is meant for charity for a larger public, yes, उनका income exempt होता है income tax में.
they have to follow some compliances, such as first thing, they have to go to department, tell department कि हम क्या कर रहे हैं. That is through form 10A and 10AB. Okay. They file application for registration under section 12. And if department allows, then your income under any source for a charitable trust is totally exempt. And you have to file ITR 7 for it. Yes. Subsequently, you can also file for ATG. हम आपने सुना होगा ना कि ATG रजिस्टर्ड फॉर्म है, सॉरी रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, ATG रजिस्टर्ड कंपनी है. जब क्लाइंट का रिटर्न भरते हो तब कभी डोनेशन की रिसिप्ट्स दिखती होगी. या सो दैट इज दैट ट्रस्ट. इफ यू हैव 12 away, then you can go for ATG as well. ATG मतलब जो मुझे डोनेट कर रहे हैं उनको 50% डिडक्शन मिल जाए. Yeah, so that is the case. Next thing, ITR 7. Okay, with this context, ITR 7 is for public charitable trust. Section 8 companies who are eligible for exemption under section 11. Yeah. So ITR 7 is a bit complicated nowadays because there are a lot of changes. And I would tell you honestly that if you start exploring ITR 7, you will find that ITR 1 and ITR 6 सब मिला के जो भी complications है वो सब ITR 7 में डाले. Yeah. Very, very tough in terms of the data that you have to fill in, the data that you have to compile. It's challenging, but it's fun. So we'll also go through ITR 7. Now let us move on to the relevant sections. Before that, I'll just plug a charger here. Oh, yeah. So let's start with section 139. Okay. IPCC में पढ़ा होगा ना 139. Yes. 139. 1 is the basic section. Every person, being a company or a firm. Okay. चलो before that, let us just revise कि क्या क्या याद है आपको. अगर मैं इंडिविजुअल हूँ और if I am a HUF, is it compulsory for me to file the return of income irrespective of my level of income? Yes or no? Loud, loud, loud. There is no right or wrong answer, Abhi, because you are all in learning phase. What I want is that there has to be some answer. There has to be some thinking on your side as well. तो ही वो immersive होगा. Otherwise मजा नहीं आएगा. Okay? Not compulsory. When it's compulsory. And what is basic exemption limit? 2,50,000. Okay? So for an individual and HUF, only if your basic exemption limit exceeds, only if your income exceeds basic exemption limit, so you have to file a return of income obligation, right? Second thing, for a firm or a company or a LLP, irrespective of your income, you have to file your return of income every year, right? Okay, so now let's read the raw section as well, yeah, bare section as well. While I tell you this, my purpose is not only to make you understand or aware about what income tax return intricacies is, but if you plan to practice in direct tax, right, how your approach should be from now. So, abhi jo bhi, if you see the section, right, that's nothing but directly taken from income tax department ka website. So, when you try to give advice to your client or when your principal asks you any question कि यार इसका research करके दो, you must Google बाद में पहले provision पढ़ना. When you start interpreting the bare provision, Google का जो आंसर उससे भी अलग interpretation
आपका आ सकता है, and which is fair enough. Tax में everything is possible, right? If you see something written 49 over there, दिख रहा है ऊपर? Yeah, in blue. So what department gives you, or even if you read Income Tax Bare Act, okay, बहुत publications का आता है, उसमें भी ऐसा कुछ लिखा होगा, where they refer to something. One thing, they may refer to relevant rules. One. The other is they may refer to relevant forms. Second. Third, they may refer to if this is a new section altogether, inserted by amendment through Finance Act 23 with effect from 1/4/24. Okay. So make it a habit to read your Bare Act while you answer any question. 44AD का doubt है client को. Go and understand what is 44AD1, 44AD4, 44AD5. Okay. When you do this, you will enjoy return filing process. You will enjoy tax. Okay. Normal Google करने से there are plethora of things that you will find, but interpretation अपना अपना ही होना चाहिए. That is one important thing. Okay. So income tax government India ऐसी site है. You can just go. That's an official site. उसमें income tax acts है. There are a lot of other financial acts, Prevention of Money Laundering Act, etc. Yes. Income tax rules है all together. Circulars है, notifications है. So every person. For myself is less than 2,50,000. हाँ sir. But my turnover is more than 2 crores. Mm-hmm. Am I liable to file it? So turnover, if it's more than 2 crores, then we directly come under 44 AB. Tax audit. But I'm not liable for ITR. 139. 139 में देश Income बेसिक ही नहीं. इनकम ही नहीं है, बट ऑडिट तो करना चाहिए 44 AB के हिसाब से. 44 AB डजंट से कि आपका इनकम क्या है, दैट डायरेक्टली टेल्स यू अबाउट टर्नओवर. विदाउट ऑडिट रिपोर्ट इन्होंने लिखा है सर, इफ देयर इज ऑडिट केस तो आपका रिटर्न भरने का जो ड्यू डेट है दैट इज 31 अक्टूबर, तो दैट इज कवर्ड इन 139(1). मतलब दैट कम्स पार्ट एंड पार्सल, ये कि ऑडिट है तो रिटर्न भरना पड़ेगा आपको, दैट इज सर्टनली कवर्ड इन 139(1). आगे है सर. यस. ड्यू डेट मीन्स, एंड इसमें लिखा है कि a person other than a company whose accounts are required to be audited under this act or under any law for time being in force, the due date is 31st October. Eligible to file the due date basis. I'm not liable. Let us read this. अगर इसमें कुछ मिला तो, but then there has to be something which makes us liable to file, because technically what you are saying is right. The only thing is there has to be something in section itself जिधर दिया होगा कि नहीं फाइल करना चाहिए. Yes. So every person being a company or a firm, or being a person other than a company or a firm, if his total income or the total income of any other person in respect of which he is assessable under this act during the previous year exceed the maximum amount which is not chargeable to income tax, shall on or before the due date furnish a return of his income or income of such other person during the previous year in the prescribed form and verified in the prescribed manner and setting forth such other particulars as may be prescribed. Yes. So to be very, very clear on this, every person, firm है, company है, कुछ लिखा नहीं है. A being person other than a company or a firm, if his total income doesn't exceed maximum amount which is not chargeable to tax, तो कुछ करना नहीं है. If it exceeds, then you have to file a return of income. Explanation 2. Yes. In this subsection, due date means where the assessee other than an assessee referred to in clause AA is a company or a person other than a company whose accounts are required to be audited under this act or under any other law for the time being in force. A partner of a firm whose accounts are required to be audited under this act or under any other law for the time being in force. So first two are very clear.
कंपनी है, फर्म है, तो आपका डेट होगा 31st अक्टूबर. Then if it's a person other than a company whose books are required to be audited, 31st October. If you are a partner of a firm where firm is applicable for tax audit, तो भी आपका ड्यू डेट होगा 31st अक्टूबर. ओके, पार्टनर का इनकम कुछ भी हो, द ओनली थिंग इज पार्टनर हैज टू बी अ एक्टिव पार्टनर. Yes, active partner matlab he has to draw some remuneration from that company. He must not be a sleeping partner. Yes, तो अगर वो है तो उनका डेट होगा 31st अक्टूबर. For every other person other than these three, your due date is 31st July. Okay. One 139.4. So the 139.4 is of belated in written. नहीं, ऑडिट की सितंबर है, आप आईटीआर ची अक्टूबर. Yes. 139.4. 139.4 क्या है? Belated written. Yeah. Any person who has not furnished a return within the time allowed to him under subsection 1 may furnish the return for any previous year at any time before 3 months. Okay. Prior to the end of the relevant assessment year or before the completion of the assessment, whichever is earlier. So you can file belated return only before 31st December. उसके बाद belated return नहीं फाइल होगा, रिटर्न फाइल होगा, but that is something different section that we have, which was recently brought. Okay, वो section याद है आपको? You cannot file belated return, but there is something that we can file. Updated return, yes. Okay, so was section 139.8A. This was a new amendment that was brought in. थोड़ा सा टैक्स ज्यादा भरना पड़ता है in terms of penalty, like in lieu of penalty. That is not penalty specifically, but yes, 25%, 50% as the case may be for which assessment year you are filing, you have to pay extra tax. But then that is one section that allows you to file your return of income for probably last 3 years. Okay. 139.5. It's of revised return. If any person having furnished a return under subsection 1 or subsection 4 prior to amendment, ये 2-3 साल पहले amendment आया था. Okay. Prior to amendment, how it was? If any person having furnished a return under subsection 1, बस इतना ही था. Yes. So if the return was belated, you were not able to revise it. Now, even if you file a return belated, you can revise it. There is no issue. So that is a breathing space that was provided. But वो breathing space भी इतनी कम कर दी है और 3 महीने की है that you have to be accurate while you file your return of income. Okay. If he discovers any omission or any wrong statement therein, he may furnish a revised return at any time before 3 months prior to the end of the relevant assessment year or before the completion of the assessment, whichever is earlier. Again, 31st December of the relevant assessment year. Okay, 1 January से you can only be in section 139.8A. Okay, let us read this. Any person. Okay. पर्सन का डेफिनेशन सेक्शन 2 में दिया है, वो हमने आईपीसीसी में किया है, राइट. इट इंक्लूड्स एवरीथिंग. पर्सन मतलब इंडिविजुअल, एचयूएफ, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, एओपी, एलएलपी, फर्म, कंपनी, एक्सेट्रा. ओके. एनी पर्सन whether or not he has furnished a return under subsection 1 or 4 or 5. ओके, आपने किसमें भी किया होगा कोई इशू नहीं है, नहीं भी किया होगा तो भी इशू नहीं है. For an assessment year, may furnish an updated return of his income or the income of any other person in respect of which he is assessable under this act. Okay? थोड़ा सा इससे बाहर आता है, एंड ये जो लाइन है that he may furnish an updated return of his income in respect of his income, ये तो मालूम है कि मेरा इनकम है तो आई एम liable to or eligible to file my return of income. But
any other person in respect of which he is assessable under the act. What is that? Okay. So just a simple example, there are a lot of cases here. But if you are legal heir, okay. So legal heir matlab there is someone who has demised, unfortunately, and now you want to take care of his or her compliances. You're a legal heir for a purpose of income tax. Then you are assessable under the act on behalf of that person. Okay, so there are a lot of cases, but this is simple to understand. So this is why I have shared this. So, wo or for your income, yeah, if you have or if you have not filed your return of income for any assessment year, let us go ahead. It can be filed at any time. Yeah, I am here. If you can just see the mouse cursor. Okay, nahi dikh raha hai. Chalo. At any time within 24 months from the end of the relevant assessment year. So AY 21-22 का रिटर्न कब तक फाइल कर सकते हो आप? AY 21-22. What is the end of that relevant assessment year? No, I just want dates. Okay, AY 21-22 ka what is the end date? When does that assessment year ends? 31st March 22, right? What is given? At any time within 24 months from the end of the relevant assessment year. मतलब exactly. So अभी भी client asks you कि मुझे AY 21-22 का रिटर्न भरना है. You can file it. Yeah, as an updated return. Provided that the provisions of this subsection shall not apply, the updated return is a return of loss. You cannot carry forward, claim any loss. One thing. Second thing, you are not eligible for claiming any additional refund. मतलब मेरा इनकम था तब 10 लाख रुपया, ओके, मैंने उसके ऊपर टैक्स भरा, फॉर सम रीजन अभी मेरे ध्यान में आया नहीं वो 9 लाख ही था. नो, यू कैन नॉट डू दैट. The government only allows you to file that return of income if there is at least 1 rupee or 10 rupee of tax payable. उसके सिवा अलाउ ही नहीं करता. अभी how to bring the tax payable is something different thing altogether, which is a practical thing that we do. Yeah, अगर रिटर्न भरना है तो एग्जाम्पशन लिमिट ही नहीं है. चलो इनकम बेसिक एग्जाम्पशन के नीचे है. There is no 234F that you are required to pay. Yes, तो क्या करें? So that is all for practical purposes. There are few things that we do, yeah, in the legal boundaries. But what important here is that you cannot claim additional refund. You cannot reduce your income. You cannot take benefit of any loss if you want to carry forward. नहीं होगा वो. Okay, loss भी होगा तो भी रिटर्न फाइल कर सकते हो आप, कोई इशू नहीं है. Given that you have some tax to be payable, but वो loss पूरा का पूरा आपका चला जाएगा. So for claiming loss, it's very important for your return to be filed within time limit under section 139(1). Okay, 139(4) भी नहीं चलता, 139(5) भी नहीं चलता. 139(5) चलता है if the return is filed under section 139(1). मतलब एग्जैक्ट जो ड्यू डेट है उसके पहले अगर आपने रिटर्न भरा है तो ही आपको वो जो लॉस है दैट यू कैन क्लेम और कैरी फॉरवर्ड. ओके, बट अदरवाइज if you file 139(4) ka return, that is belated return, you can just set off that loss within that year itself. You cannot carry forward it. Okay, so for any assessee, if बताया आपको कि ये लॉस का रिटर्न है तो that has to be a priority, that has to be given. Yeah, it's a practical life thing. चलो एक बार टैक्स पेएबल का रिटर्न जो भी है वो थोड़ा लेट गया बिकॉज क्लाइंट का डेटा नहीं आया, चलता है. Yeah, because he has to pay 1,000 rupees or 5,000 rupees की penalty because it was his mistake that he didn't give data on time. But if you have lost का data and you are not filing your return of income, that will be a big blow to the assessee because उसका loss कितना भी हो वो carry forward नहीं होगा, अगले साल उसको income tax ज्यादा भरना पड़ेगा. So that has to be always given a priority. Okay, this is all practical things that we have been facing years on years, right? So going ahead, 139(9) डिफेक्टिव नोटिस अगर आती है तो कभी कभी क्या होता है
that there are certain discrepancies that CPC finds out. Now, what is CPC? Central Processing Center. Yeah, Bangalore में located है. There are things that they have a system in place where they match things with the data that they have. Let it be 26 AS, let it be AIS. There may be some issues while you fill your return of income, and when they find out that there is some mismatch, what they do is they tend to make that return a defective return. अभी एक बार return defective है तो they will send you a notice. Okay, and when you receive a mail from a client कि मेरा ऐसे मुझे ऐसा notice आया, if it's a defective return, the first thing that you have to do is you have to attend that. Because if you do not attend defective return की notice, after a point of time, that defective return gets invalid return. And invalid return का क्या मतलब है? रिटर्न फाइल नहीं किया है, 10 करोड़ का इनकम है मेरा, देयर वाज सम सिंपल मिसमैच, उसकी वजह से डिफेक्टिव हो गया था, एंड इफ यू डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू इट, उसके बाद वो इनवैलिड हो गया, दैट्स अ ह्यूज ब्लो टू द क्लाइंट बिकॉज रिटर्न ऑफ इनकम इज एवरीथिंग फॉर हिम. कल बैंक में जाएगा लोन लेने के लिए, आपका रिटर्न दिखाओ. यस, इफ यू वांट्स टू हैव अ पासपोर्ट और अ वीजा, रिटर्न चाहिए, उसके सिवा कुछ हो ही नहीं सकता. So if it's an invalid return for simple, probably you can say clerical mistake or for simple misunderstanding of some income, it's a huge blow. So you have to make sure that कभी भी आपको notice आए section 139(9) पे, you have to attend it with utmost seriousness and sincerity. Yeah. Now there is a proviso also given, which may come to rescue, but कभी वो ज़्यादा try करना नहीं है हमें. Okay. So what is that? Provided that where the assessor rectifies the defect after the expiry of the stayed period of 15 days or the further period allowed, but before the assessment is made, the assessing officer may condone the delay and treat the return as a valid return. There are powers given to the assessing officer. चलो नहीं हुआ आपका 15 दिन में रेक्टिफाई, जो भी एक 15 डेज का एक 15 डेज का एक लिमिट देते हैं, आपका नहीं हुआ रेक्टिफाई, नो वरीज. बट इफ यू रेक्टिफाई इट एंड इफ यू write a letter seeking condonation of delay, AO has right to provide you the condonation, but if you read what is given, assessing officer may condone the delay. He is not bound to condone the delay. He may, so it's at the discretion of assessing officer. Yeah. So it's better that we take this notice seriously and make any rectifications possible, file a rectified return. So if I'll show you in software as well how we basically respond to 139(9) का defect. Yeah. So उस वो return file करना, that is pretty important. Now let us move ahead. Okay, what we'll do is we will go through these FAQs first, and then we will come to the software, right? So once we are into practical things of life, it will be a bit easy. Yeah. First thing, are you required to keep a copy of written file as a proof, and for how long? So अभी तो पूरा का पूरा सब ऑनलाइन है. Yeah. But कभी कभी it happens that it has happened that when there is a system shift, जो अभी बीच में हुआ था, that income tax side was totally changed, right? There were few clients जिनका income tax return हमें मिला ही नहीं in that transfer. So it's better that you have a copy saved on your system in the clients folder, which is having a good backup. Yeah. अभी backup लेना नहीं लेना आपके हाथ में नहीं है, but this is for future practical purposes when you start your own practice or when you are working as somewhere as a associated CA, right? That's a practical thing that you have to do. The other thing, there are various deductions that are not reflected in the form 16 issued by my employer. Okay. कभी कभी ये होता है कि आपके पास फॉर्म 16 आता है, उसमें HRA का क्लेम ही नहीं होता, कभी उसमें कभी कभी मेडिक्लेम नहीं होता, ATC के डिडक्शंस नहीं होते, बट असेसी बोलते हैं नहीं यार मैंने किया है बट वो एम्प्लॉय को मैं देना भूल गया. कभी कभी एजुकेशन लोन जो होता है उसका डिटेल्स नहीं रहता. या सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द मेन इशू दैट यू मे फेस कि क्या करना चाहिए.
whether shall I listen to client or shall I just look at form 16? What's your take on this? What do you guys do? Without verification or with verification? With verification. Yes. If there's HRA, you have to make sure that you have rent agreement, payment receipts, etc. and then listen to client. Because again, आपने रिटर्न भर दिया क्लाइंट के हिसाब से, दैट्स फाइन. कल कुछ हुआ तो क्लाइंट बोलेगा नहीं कि मैंने बताया था, राइट? क्लाइंट बोलेगा आपको मैंने दिया था, आपने किया, आपने, नाउ यू टेक केयर ऑफ दिस, अगर नोटिस आया तो. या ही वोंट एडमिट हिज मिस्टेक कि नहीं मैंने आपको गलत दिया था. सो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस व्हेन यू इन डेटा and which has impact, direct impact on income, you make sure that you verify it. अगर टू एंड फ्रो हो क्लाइंट से तो भी चलता है, बट यू हैव टू मेक श्योर कि जो भी डेटा है दैट इज जेन्युइन. फॉर दैट यू हैव टू चेक सिंपल थिंग्स. या मतलब ये इतनी बेसिक चीज है कि समटाइम्स वी जस्ट टेक इट फॉर अजम्पशन लेते कि नहीं ये सही ही होगा. बट फर्स्ट थिंग, LIC की रिसिप्ट मिली आपको, डेट चेक करो उस पर, कौन सा डेट से कौन सा डेट का है. क्लाइंट कभी आपको पुराना भी देगा, इस साल प्रीमियम भरा भी नहीं होगा. हम क्या देखते हैं, सिर्फ अमाउंट देखते हैं, चलो ये है ना है, डेट नहीं देखते. कल स्क्रूटनी आई एंड वी आस्क फॉर क्लाइंट कि नहीं ये मेरे पास पुराना, क्लाइंट बोलेगा नहीं भरा नहीं था मैंने. ओके, एंड ही सेज नाउ यू लुक एट इट, आई डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग विद इट, यू लुक एट इट और आई विल फाइंड समवन एल्स. वेरी सिंपल. सो डेट चेक करना. LIC में भी देयर आर फ्यू पॉलिसीज जिसमें आपको ATC का डिडक्शन नहीं मिलता अगर सिंगल प्रीमियम है तो. ओके, फॉर दैट यू मस्ट नो व्हाट ATC सेज. सो ATC में आपको पता है PPF आता है, LIC आती है, ट्यूशन स्टैम्प ड्यूटी जो भरती है प्रॉपर्टी पे वो आती है, ट्यूशन फीस आती है. बट एक बार ATC पढ़ लो ना, एग्जैक्टली क्या क्या आता है. नाउ फॉर टू थिंग्स आई एम टेलिंग यू. वन, तो यू कैन वेरीफाई व्हाट क्लाइंट एग्जैक्टली गिव्स यू. सेकंड थिंग, क्लाइंट आपको पूछ रहा है यार ATC में डिडक्शन चाहिए, मैं क्या कर सकते हो. और सो यू कैन आस्क हिम क्वेश्चंस कि ओके व्हाट एग्जैक्टली एवेन्यूज यू हैव, ये मेरे पास ऑप्शंस है, आप किसमें भी कर लो. So ATC में there are a lot of things. Just have a glance at ATC once at any point of time when you have time. Okay. Next thing, when you go to your mediclaim, mediclaim में देख लो कि exactly कौन कौन पॉलिसी में कवर्ड है. Yes, पॉलिसी में पेरेंट्स कवर्ड है. पॉलिसी पेरेंट्स आर मोर देन 60 years of age, that they are senior citizens suppose, उनके नाम में पॉलिसी है तो they have got more deduction. तो आपको ये भी पूछना चाहिए कि ओके आपके पेरेंट्स कवर्ड है इसमें, आपके पेरेंट्स का मेडिक्लेम है, तो व्हाट एग्जैक्टली इज द डिडक्शन दैट यू हैव, व्हाट एग्जैक्टली इज देयर एज, तो यू कैन टेक केयर ऑफ कि डिडक्शन एग्जैक्टली कितना है. या उसके बाद देयर इज 5,000 रुपीज का प्रिवेंटिव मेडिकल चेकअप का भी मिलता है आपको. नाउ वी एवरीवन नो दैट देयर इज समथिंग इन ईयर दैट एवरीवन डज, आइदर फॉर हिज और हर पेरेंट्स और फॉर हरसेल्फ और हिमसेल्फ. एक प्रिवेंटिव मेडिकल चेकअप तो लेता ही है. You can ask that client कि आपने लिया था क्या कभी. क्लाइंट को पता नहीं है कि ये डायरेक्शन मुझे मिल सकता है, बट व्हेन यू आस्क हिम प्रोएक्टिवली ही सेज हाँ मैंने लिया था, सो यू कैन जस्ट से कि नहीं ओके सो इफ यू आपने लिया था आई कैन गिव यू सम एडिशनल रिलीफ फ्रॉम टैक्सेशन, ही विल बी हैप्पी विद यू. सो यू हैव टू बी प्रोएक्टिव in couple of things. First, knowing what exactly sections is. Second, in communicating with the client. और एक चीज है इसमें, सीनियर सिटीजन पेरेंट्स है, ओके, उनका मेडिक्लेम नहीं है, बट मेडिकल पे खर्चा तो होगा ही. मेडिकल पे भी खर्चा हुआ तो देयर इज अमेंडमेंट, एक 2 साल पहले आई है कि 50,000 तक जो भी एक्सपेंसेस आप इनकर करते हो उसका आपको डिडक्शन मिल जाता है अंडर सेक्शन 80D. पूछ लो क्लाइंट से कि चलो आपका मेडिक्लेम है, आपके पेरेंट्स का है क्या, नहीं है, मेडिकल पे खर्चा हुआ है क्या, हुआ है, बिल्स है आपके पास है, टेक दोज बिल्स, चेक द अमाउंट. 50,000 से ऊपर है तो 50,000 पूरा का पूरा डिडक्शन ले लो ना. क्लाइंट वुड बी हैप्पी, यू वुड बी हैप्पी, राइट. So for every practical purpose, again I am saying कि knowing income tax act word to word बाहर नहीं होना चाहिए. Every time when a client comes to me, even if it's 44AD section, which I have read so bar, yeah, minimum 100 times I have read abhi tak. I open that section again and go through each and every word to make sure that I am not missing anything, because every client has different facts.
if it's section 44ADA, 44AB, I read it again. Okay. So when you are advising, it's better that you understand every bit and piece of that section that you're referring to. ठीक है? अभी चलो एक काम करते हैं. I won't show you the next slide. I just ask the question. उसका ओपिनियन लेते हैं and then we'll proceed ahead. ठीक है? आपका टोटल टैक्स आता है लेट्स से 10,000 रुपीज टू बी सिंपल. आपका टीडीएस हुआ है 12,000 रुपीज. सो 2,000 रुपए ज्यादा ही भरा है. या चल 2,000 ज्यादा भी नहीं, 10,000 का 10,000 ही भरा था टीडीएस. स्टिल यू आर obliged to file your income tax return या नहीं? बिकॉज टैक्स तो मैंने भरे है ना गवर्नमेंट. You're, it's compulsory. Okay. Because anything that you pay taxes to the government, गवर्नमेंट के पास उसका प्रूफ तभी है when you self declare it through your return of income. आपने डिक्लेयर किया नहीं तो गवर्नमेंट वुड से कि आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो उसका अलग से एक सेक्शन है, सेक्शन 270 में या एंड 234F, अलग से एक पेनल्टी लगेगी. बट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू फाइल योर रिटर्न ऑफ इनकम. द अदर थिंग, रिटर्न ऑफ इनकम अगर 31 दिसंबर के बाद भरा तो जो भी आपका 12,000 का क्रेडिट है या 10,000 का क्रेडिट है वो आपको मिलेगा नहीं मिलेगा. सो फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम इज नेसेसरी टू मेक श्योर दैट गवर्नमेंट नोज कि आपका ये क्रेडिट है तो ही आपको क्लेम कर पाओगे. ओके. अगर रिटर्न नहीं भरा, ओके, इफ इट्स अ विलफुल ओमिशन, क्या क्या हो सकता है? इंटरेस्ट. ओके. और क्या क्या हो सकता है? हम्म हम्म एनीथिंग एल्स मोर सीरियस? हाँ, that is one thing. Then that you have to prove the source. Source prove हुआ तो चलो ठीक है, फिर भी that can be taken care of. Declaring as not filer ये तो बात है, बट उसका consequences क्या है, implications क्या है? एक इंटरेस्ट है, एक पेनल्टी है. एनीथिंग मोर सीरियस? हाँ नहीं नहीं ये तो है. पासपोर्ट भी नहीं मिलेगा, पासपोर्ट मिल जाएगा, वीजा नहीं मिलेगा. ओके. देयर कैन बी अ प्रोसिक्यूशन. ओके. अंडर सेक्शन 276 CC, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस may attract in interest, penalty and prosecution. The prosecution can lead to rigorous imprisonment from 3 months to 2 years. When the tax ought to be evaded exceeds 25 lakh, the punishment could be 6 months to 7 years. Okay. अभी तक it's rarely used section, अभी तक. But TDS में they have started prosecuting people. Yes, there was one case जिधर we had to go to commissioner, and there is a provision कि commissioner has right to drop the prosecution proceedings if there is some justifiable what you can say cause with you. So हमारा केस था वो कोविड वाला था. ओके. देयर वाज जस्टिफाइबल कॉज, डायरेक्टर्स ने पैसा डाला था टू मेक श्योर दैट द कंपनी सर्वाइव्स. सो हमारी बात इट वाज ट्रू, बट नॉट एवरी टाइम दिस कुड हैपन. एंड नाउ गवर्नमेंट इज वेरी सीरियस ऑन मेकिंग श्योर दैट यू कंप्लाई और देयर इज अ प्रोसिक्यूशन दैट हैपेंस. सो अभी तक तो ये सेक्शन रेयरली यूज्ड है. टीडीएस में दे हैव स्टार्टेड प्रोसिक्यूटिंग, बट एक बार व्हेन दे हैव ऑल द डेटा विद देम and if they start using this section, the implications are very very huge. Okay. Basic questions. When I share the PPT with you, कभी कभी आपको अगर रेफरेंस में लगा तो नहीं लगना चाहिए, because this is very basic. And for जो आप काम करते हो उसमें you take care of these questions. Yeah. What exactly is the utility provided by income tax department, जो हम कभी देखते नहीं है. Right? यूटिलिटी से भरता है कोई अभी तक रिटर्न? ओके. सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करते हो? विनमैन कितने लोग यूज करते हो?
ऑलमोस्ट एवरीवन। वो मुझे याद है एक एडवर्टाइज आती थी कि टाइम से कौन है, वैसे सब टाइम का हाथ ऊपर करते थे फॉर एमबीए क्लासेस, वैसा विनमैन इज एवरीवन प्रोबेबली। व्हाट इज द अदर सॉफ्टवेयर समवन सेड? जीनियस इज आल्सो गुड। ओके, एनीथिंग एल्स फ्रॉम दिस? केवल दो ही है, कंप्यूटर्स भी है। ओके ओके, सो नाउ देयर इज यूटिलिटी दैट बेसिकली गवर्नमेंट प्रोवाइड्स, एंड पहले यूटिलिटी में आता है। सो इफ यू आर प्रोएक्टिव एंड थोड़ा देखना है आपको कि एग्जैक्टली क्या क्या प्रोविजन से क्या क्या एग्जैक्टली कॉलम्स रोज डाले, तो यूटिलिटी इज समथिंग दैट यू कैन रेफर टू। बेनिफिट्स ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, लोन मिलेगा, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी, एवरीथिंग। ओके, दैट्स फाइन। इज इट नेसेसरी टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम व्हेन आई डू नॉट हैव एनी पॉजिटिव इनकम? कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, yes, so it's important. Will I be penalized on late filing of ITR even when I am not liable to file it? Yes or no? If your income is below 2,50,000 rupees and you file belated return of income, there is no penalty. Okay? If I fail to furnish my return within the due date, will I be fined or penalized? Okay, फाइन कितना है वो 34F में? इसमें तो पढ़ लो, अभी दिया ही है। 5,000, ठीक है। पहले एक साल पहले इट वाज, अगर 31 दिसंबर के बाद, बट 31 मार्च के पहले आपने फाइल किया तो 10,000 लगते थे। नाउ देर इज नो प्रोविजन ऑफ दिस 10,000, इट्स कंप्लीटली गॉन। यू हैव टू फाइल योर रिटर्न अंडर सेक्शन 139 8A। ओके, अगर 31 दिसंबर के बाद गया तो कैन द रिटर्न बी फाइल आफ्टर द ड्यू डेट? यस। कैन द रिटर्न ऑफ इनकम बी फाइल आफ्टर एक्सपायरी ऑफ ड्यू डेट टू फाइल बिलेटेड रिटर्न? सेक्शन 139 8A। If I have paid excess tax, how it will be refunded to me? Simple है, return file करो, claim करो, that's it. If I have committed any mistake in my original return, am I permitted to file the revised return? Yes, till 31st December. कितने बार रिवाइज कर सकते हैं रिटर्न हम? टेक्निशियन नहीं पता आपको? व्हाट इज इट? अब इधर देखो, ओके, रिबेट है। ओल्ड रेजिम, न्यू रेजिम, बताए? हाउ मेनी आर नॉट अवेयर ऑफ ओल्ड रेजिम एंड न्यू रेजिम? बी ऑनेस्ट, मतलब आई नो नॉट एवरीवन विल बी अवेयर। ओके, एनीवन एल्स? आई जस्ट गो इन डिटेल थोड़ा सा। ओके, old regime is something that we used to file the return of income till date. It is C, HRA, सेक्शन 10 के एग्जाम्पशन जो भी है वो सब उसमें मिलते थे। फॉर सम रीजन नाउ गवर्नमेंट हैज गॉट दिस व्यू probably that you can increase the spend, one thing, or second thing कि we have to simplify this process of filing return of income. Verification process has to be simplified. कभी कभी क्या होता है, देर आर लॉट ऑफ असेसेस जो एग्जाम्शन दिखा देते, डिडक्शन दिखा देते, कुछ आया तो देखेंगे। यस, कॉल देम जुगाड़ू असेसेस, काफी होते हैं। यू नो, आई नो, वी ऑल नो, या। सो लिटिगेशन कॉस्ट जो है गवर्नमेंट की, वेरिफिकेशन कॉस्ट जो है वो बढ़ती है, रेवेन्यू तो जाता ही है। सो दैट वुड बी द सेकंड पर्पस, व्हिच इज फेयर इनफ। इन द न्यू रेजिम व्हाट दे हैव डन इज टैक्स रेट काफी कम किए लोगों ने, एंड जो आपके एग्जाम्शन डिडक्शन है वो निकाल दिए। Now, if you want to exactly check कि exactly क्या क्या difference है, if your income is below above 15 lakh rupees in a year, and you can write this somewhere. This is very useful what I'm saying now. If your income is above rupees 15 lakhs and you do not have deductions and exemptions more than rupees 3,75,000, exact figure I'll show you how I have derived it. ठीक है?
if your exemption and deduction is not above 3,75,000, new regime is beneficial for you. If your deduction exemption are above rupees 3,75,000, if your income is above rupees 15 lakh, old regime is beneficial for you. And for new regime to be old regime to be beneficial, a couple of questions that you have to ask. दो ही केसेस में ज्यादातर ये हो सकता है. ओके चलो, एटीसी का लिमिट कितना ले सकते हैं हम? नहीं, एटीसी मैक्सिमम 150, 50,000 का एनपीएस, सेक्शन 80 डी. सो टोटल आपका 80 80 डी में 2 लाख हो गया. उसके ऊपर तो आप जा ही नहीं सकते, कुछ भी कर लो. मेडिक्लेम 25,000, कितना हो गया? 225. प्रिवेंटिव मेडिकल चेकअप ले ही लो 5,000, 2,30,000. चलो एज्यूम भी करते हैं कि यू हैव योर पेरेंट्स, 25,000 एडिशनल ले लिया आपने, 280. अभी इसके अलावा देयर इज नथिंग इन माई हैंड दैट आई कैन डायरेक्टली और इन रेगुलर कोर्स ऑफ माई लाइफ कुछ होता है. टू इट इज मैक्सिमम डिडक्शंस. अगर सब यूटिलाइज करूँ, एनपीएस भी कर लूँ, पेरेंट्स का भी एक्सपेंडिचर है, मेडिक्लेम है, जिनका प्रीमियम 25,000 के ऊपर जाता है, ओके 2,80,000 आता है. एनीथिंग एल्स दैट आई एम मिसिंग? 10,000 के ऊपर तो नहीं जाएगा ये. ओके चलो 290 ले लो. एनीथिंग एल्स? सेक्शन 80 टीटी ए, राइट? रेंजचं आहे. हो, पण म्हणजे मी फक्त म्हटलं रेग्युलर कोर्समध्ये जे होईल ते 290 पर्यंत आलो. मग आता एचआरए जर असेल, ओके, आणि इफ देर इज नो एचआरए, यू आर नॉट अ सॅलरीड पर्सन बट स्टिल यू आर पेइंग रेंट, देर इज वन सेक्शन इन इनकम टॅक्स वेर यू हॅव टू फाइल अ फॉर्म and then claim the benefit of that section, and you get deduction of that rent that you are paying up to 24,000. So that is one section. Okay, so when you have 280 tak baki ke, unless until you have rent that you are paying, you either get HRA or any benefit of this section under section 80 if you are not salaried. If you have education loan, उसके ऊपर का जो इंटरेस्ट है वो जा सकता है. So unless and until there is HRA, rent that you are paying, or education loan का interest, yeah, if you are contributing to any political party etc., तो ही 3,75,000 का जो फिगर है that you can cross. Okay, so अभी from assessment year 23-24, so 24-25, it's very very simple कि old regime and new regime में कैसे you have to put your assesses in. Till last year we had to ensure कि चलो पूरा भरो, and then we used to have that drop down कि 115 BAC yes or no करो, and वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक कैलकुलेट करता था. ठीक है, there was no kind of benchmark, there was not a single figure that used to come in our mind. But अभी it's very clear कि आपका इनकम 15 लाख के ऊपर है, आपके डिडक्शंस एंड एग्जम्पशंस आर not above 375 तो न्यू regime, above 375 तो old regime. ठीक है. So this is one thing, just remind me when I open the software, I'll just show you that how basically we have derived at this figure. Okay. So now let us come back to our question, section 87A का rebate. इसमें there is one change that is interesting, इसलिए I just want to elaborate on that. 87A में 12,500 का आपको रिबेट मिलता था अगर आपका इनकम एग्जैक्ट 5 लाख है. 5 लाख 1 रुपया भी हुआ तो यू हैव टू पे 12,500 प्लस जो भी उसके ऊपर का 20% है वो. नाउ इन न्यू रेजिम, इफ यू रीड दिस लाइन नाउ, if the total income of the resident, okay, I'll just tell you the third line, और नीचे से if you can just see 1 2 3 4 5th line. Further, if the total income of the resident individual opting section 115 BAC, that is new regime, exceeds rupees 7 lakh, okay, and the tax payable on such income exceeds the difference between the total income and 7 lakh, he can claim a rebate with marginal relief to the extent of the difference between the tax payable. So marginal relief का concept बताया आपको. When it is used,
नहीं नहीं नहीं, मतलब जनरल इन ये तो अभी रिबेट का है, दिस इज फर्स्ट टाइम ये आया है रिबेट में, बट अदरवाइज किधर यूज करते थे आप? सरचार्ज के केस में, राइट? सेम थिंग, सेम प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड इफ यू आर अंडर न्यू रेजिम एंड आपका इनकम चलो 7,08,000 रुपया है, ओके? इन दैट केस मार्जिनल रिलीफ आपको मिल सकता है, 8,000 ही भरने पड़ेंगे, नॉट द होल अमाउंट दैट काउंट्स, ओके? सो दिस इज द बेनिफिट दैट दे हैव गिवन. So with this, we come to end of the presentation per se. Now let us travel to software. उसमें थोड़े से practical approaches देखते हैं. But before that, let's take a couple of minutes. आपको कुछ questions है specifically in all this theory that we have discussed. Yeah. So you can ask and then we can move ahead. हम्म. हाँ सर. यस यस, मैं अभी वो इसमें दिखाने वाला था सॉफ्टवेयर में. यस. यस. सीनियर सिटीजन होना चाहिए वन केस, एंड सेकंड थिंग उनका मेडिक्लेम नहीं होना चाहिए. अबे मेडिक्लेम हुआ तो हाउ दे चेक? जस्ट रीड बिटवीन द लाइंस. गॉट इट? एनीथिंग एल्स? ओके चलो. इवन इफ यू फील दैट ये पेज पे कुछ नहीं है, सिर्फ पर्सनल इंफॉर्मेशन डालनी है, there are few things that you have that are very important on this page as well. One thing, residential status. अगर आपका एसएससी रेसिडेंट नहीं है, is non-resident, to make sure that you go here and click non-resident before even filing his entering his name, because there are few provisions for residents which are not applicable for NR, and for NR a few things that are not applicable for residents, and it's a huge mismatch. गलती से भी आपका वो रिटर्न रेसिडेंट बोल के फाइल हुआ, चेक नहीं हुआ, वेरीफाई नहीं हुआ, right? There's a huge implications that you may have. So make sure first thing, and if you want you can just make a note of it कि हमें क्या क्या चेक पॉइंट्स है वो दिखने चाहिए. रेसिडेंशियल स्टेटस इज द फर्स्ट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. दूसरी बात, डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न. दो चीजें हैं इसमें. अगर आप नॉर्मल रिटर्न भर रहे हो तो करंट डेट ही होनी चाहिए. कल मैंने भर के रखा था, ठीक है, और आज मैं फाइल कर रहा हूं तो भी फाइलिंग की डेट ही होनी चाहिए, करंट डेट. बट वेन यू आर रिवाइजिंग इट, रेक्टिफाइंग इट एक्सेट्रा, और जस्ट चेकिंग इट फॉर द पर्पज ऑफ कि कुछ एनालिसिस करना है आपको, मेक श्योर दैट यू चेंज दिस डेट. जो डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न है वो चेंज कर लो, तो ही आपका जो एनालिसिस है वो सही आएगा. ओके, दिस इज द सेकेंड थिंग. नेक्स्ट, ड्यू डेट. पार्टनर है फर्म का, फर्म का ऑडिट है, तो ड्यू डेट क्या है? 31 अक्टूबर, राइट? मेक श्योर दैट यू हैव दिस ऑडिट केस क्लिक्ड, वरना आपके पेनल्टीज फाइन बढ़ जाएंगे. ओके, नाउ लेट अस कम टू some topics which are very very essential and relevant. The other thing that you have to check, earlier there was only 26 AS, okay? Now you have EIS as well, okay? Exactly 26 AS and EIS से क्या क्या होता है वो बताओ. What is the difference between the two? हम्म.
So it's annual information statement. Okay, there is information that is given in AIS. 26 AS will show you कि आपका TDS कितना डिडक्ट हुआ है on what income. Okay, 26 AS is compiled on the basis of TDS return जो टैक्स डिडक्टर फाइल करता है, राइट? ओके, नाउ कपल ऑफ थिंग्स. जो आपका 26 AS है या इवन AIS है, अभी कैसे करते हो आप? यू इंपोर्ट 26 AS, जो भी इनकम है वो लेते हो अदर सोर्सेस में, अगर बैंक का है तो. अगर कॉन्ट्रैक्ट का है एक्सेट्रा, यू मैच इट विद टैली. या कभी कभी वो भी मैच नहीं करते, अगर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं है तो फटाफट से एडी में उतना टर्नओवर डाल दो, बात खत्म, राइट? करते हो ना? AIS शेयर का स्टेटमेंट लेते हो क्लाइंट से या बंद कर दिया अभी? लेते हो अभी भी? या जो जितना AIS में है उतना ही कंपाइल कर लो? AIS से वो तो आता है पूरा, डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ सेल एक्सेट्रा. क्लाइंट से भी लेते हो? एवरीवन टेक्स इट. सो सी, ओके, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट AIS से डालते हो या इंटरेस्ट सर्टिफिकेट से डालते हो? इंटरेस्ट सर्टिफिकेट से कितने डालते हैं और कितने लोगों का अवेलेबल रहता है? Okay. Why I'm asking this is, we have seen, चलो 26 years is still reliable because TDS का जाता है स्टेटमेंट या डिडक्टर का, और उसके हिसाब से कंपाइल होता है. AIS till date there are a lot of cases where we have found high deviations. आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपकी बैंक ही नहीं है, और हमने ये कंफर्म किया कि क्लाइंट के बैंक नहीं है. बिकॉज कुछ कुछ केसेस में ऐसा हुआ है कि क्लाइंट ने हमें बताया नहीं था ये बैंक है, बट जब हमने उनको पूछा, ओह आपको कैसे पता चला? या दिस इज हैपन विद AIS. अरे क्लाइंट वाज आल्सो शॉक कि मैंने तो आपको बताया नहीं था ये. सो दैट हैज हैपेंड, बट लॉट ऑफ केसेस में देयर इज नो ट्रांजैक्शन इन शेयर जो क्लाइंट का था, वो रिपोर्ट हुआ है क्लाइंट के AIS में. इंटरेस्ट कभी क्लाइंट का नहीं था. मैंने रिसेंटली देयर इज अ केस, देयर वाज अ ई कैंपेन दैट हैपेंस. ओके, अगर आपको बताया तो ई कैंपेन इज AIS के इंफॉर्मेशन मैच करते हैं ये लोग विद योर रिटर्न ऑफ इनकम एंड दे सेंड यू नोटिस कि AIS में इतना दिखता है, AIS में जाके रिपोर्ट करो कि व्हाई देयर इज अ डेविएशन. रिसेंटली देयर वाज वन केस वेयर क्लाइंट का इंटरेस्ट दिखा रहा था 1 लाख, बट वो बोलता है मेरा कभी बैलेंस 10 लाख के ऊपर नहीं गया, एंड अभी अगर इंटरेस्ट का रेट देखो तो 2% है, 20,000 के ऊपर तो मेरा इंटरेस्ट है ही नहीं, एंड AIS में दिखा रहा था 1 लाख रुपीज. जस्ट इमेजिन इफ आई हैव टेकन दैट 1 लाख, टैक्स इतना बढ़ जाता, 80,000 का 30% पकड़ लो, 24,000. So matching your 26 AIS and AIS with the return of income is one thing that you have to do. The other thing that you have to do is matching your 26 AIS and AIS with actual documents that you have. अभी 31 जुलाई अगर आपकी ड्यू डेट है, आपको बताए, तो जो जो क्लाइंट्स है आपके दैट यू आर हैंडलिंग, अभी से उनको बोल दो ना आफ्टर 31 मार्च कि यार टेक अ प्रोविजन इंटरेस्ट सर्टिफिकेट और टेक अ फाइनल इंटरेस्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम योर बैंक. अप्रैल में बैंक भी फ्री होती है, क्लाइंट भी फ्री होता है, हम भी फ्री होते हैं. प्रिपेयर अ चेकलिस्ट ऑफ व्हाट एग्जैक्टली यू वांट फ्रॉम द क्लाइंट. शेयर का स्टेटमेंट चलो मेल पे आता है आजकल. इफ देयर सम ब्रोकर जो नहीं देता मेल पे, जाके ले लो ना. 25 जुलाई से 31 जुलाई में से भाई यू वांट दैट ओनली 6 days फॉर दैट क्लाइंट, यू वांट दैट क्लाइंट टू गो एवरीवेयर, गेट दिस डॉक्यूमेंट्स एंड गिव इट टू यू. अभी प्रोएक्टिवली बोल दो क्लाइंट को. दैट विल मेक 2 things वेरी क्लियर. एक तो आपकी मिस्टेक्स कम होगी, क्लाइंट को लगेगा कि ओके ओके माय CA or person I'm working with is proactive, and third thing, your principal also will be happy. Okay, so अभी अभी बोल दो, once you go in office you can tell them कि चलो सर ये चीजें हम कर सकते हैं क्या. You just prepare a checklist. आपको क्या क्या लगता है? If you're a first year article, ask your senior कि हमें क्या क्या लगता था. If you're a third year article, you know हमें क्या लगता है, क्या डिफिकल्टीज आती है. जस्ट प्रिपेयर चेकलिस्ट, सेंड इट टू एवरी क्लाइंट कि ये मुझे 30 अप्रैल के पहले दे दो. आपको देगा 31 मई के इस पे ही. या क्लाइंट आर ऑल्सो नॉट दैट प्रोएक्टिव, बट एटलीस्ट यू विल गेट इट बिफोर June. देन यू हैव 1.5 month टू मेक योर वर्किंग्स. यू कैन मैच इट विद AIS. AIS में डेटा आता है या 26 AIS में डेटा आता है आफ्टर ऑन द 15 June. What is the last date of Q4 TDS filing?
31 मई, उसके बाद 15 दिन के बाद डेटा आपका एक्यूमुलेट होता है. बट before that, if you have documents with you, you can just check it and finalize that source of income. ठीक है? So that is one thing that you have to do. So matching that is very important because ये जो data है government के पास, now with AI also coming in place, machine learning पता नहीं कब use करेगी government, but with AI in place, it's very simple for government to find out assesses who have large deviations. Large क्या? 10,000 के deviation है तो भी वो पकड़ लेते हैं and they send notices. So just match it. That is the first thing that you have to do. Okay, after this basic changes that I have told you, इसके बाद what you do is directly import 26 years. Do not go to competition statement as well. 26 years input करो and उसके बाद ही competition पे जाओ. Okay, simple mistakes that happen ना, ऐसा भी होता है कि 26 years refund एक client को पता है, loss है. Okay, हम क्या देखते हैं, भरने को कुछ आया क्या? नहीं आया. पेबल कितना था? 0. कर दो फाइल. 26 years में क्रेडिट था 25,000 का, नहीं ध्यान में आता. एट लास्ट मोमेंट इतनी रश रहती है कि नो वन हैज टाइम टू वेरीफाई व्हाट वी हैव डन, नॉट इवन आवरसेल्व्स. एक बार भर दिया तो भर दिया. ओके, सो आफ्टर दिस इफ यू वांट टू हैव अ फ्लो, 26 years इंपोर्ट कर लो. बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू. नाउ लेट अस गो टू नेक्स्ट पार्ट. ओके, इसमें एनी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज दैट यू गाइस हैव फेस्ड 26 years AIS में? एनी क्वेश्चन ऑन दिस? Because this is a crucial part per se. एक्चुअल इनकम ही दिखाना. अगर एआईएस में शो हो रही है तो एक्चुअल इनकम ही दिखाना. जस्ट मेक श्योर दैट जो एक्चुअल इनकम है वो एक्चुअल इनकम है, जो एक्स्ट्रा है वो नहीं है एग्जैक्टली. या बट एक्चुअल इनकम दिखाना, देन यू कैन जस्टिफाई. बिकॉज एआईएस मैंने जैसे बोला कि इट्स इंफॉर्मेशन विच इज कमिंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ सोर्सेस एंड एवरी सोर्स, there is no guarantee that every source is giving correct information to the government, be it because of clerical errors, because of negligence. Yeah. कैश डिपॉजिट रिपोर्ट किधर करने नहीं पड़ती बेसिकली, राइट? बट इतनी कैश डिपॉजिट है ही नहीं, तो देयर विल बी अ नोटिस दैट यू विल हैव. मेक श्योर कि डिपॉजिट एग्जैक्टली कितने हैं. वाई दो डिपॉजिट्स आर, लोन नहीं है ना किसका, तो देयर आर फ्यू सेक्शंस दैट यू हैव टू चेक. सेक्शन 269 एसटी चेक करना पड़ेगा आपको कि देयर इज नो रिसीट ऑफ 2 लाख रुपीज इन वन पॉइंट ऑफ टाइम इन कैश. सेक्शन 269 एसएस चेक करना पड़ेगा, वो चेक कर लो. इवन दो इफ देयर इज डेविएशन, योर रिटर्न वुड नॉट बी impacted, right? Because that's not income specific. Okay, now when you're finalizing accounts and deposit जितना आपका बैंक में उतना ही है, तो that's enough, right? You do not have to account for it if that's not your cash deposit. Okay, let's go ahead. Nothing. So let us select everything. Yeah. And ये अभी जो मैं दिखा रहा हूँ, that's for individual. Okay, individual or HUF, it's one and the same thing. Only the difference that we saw is HUF cannot file ITR 1. ठीक है. इसमें there are few important points that we need to verify. First is okay, employer salary जब भरते हो आप, anything that you select from here, make sure that if you take the salary allowances and perquisites, आपका जो भी total received है, it has to exact match with salary that is shown in form 16. Exemptions भी है तो अलग से दिखाना, वो in exempt column में. Okay, they check amount of salary that you have shown as your gross salary and they match it with 26 AS or form 16. गलती क्या होती है, एग्जाम्ड है तो हम बेसिक सैलरी कम दिखाते हैं. या एंड देन देयर इज अ मिसमैच की नोटिस, वापस वो रेक्टिफाई करो. सो डिस्क्लोजर हैज टू बी वेरी परफेक्ट. दिस इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट व्हेन वी फाइल अ सैलरी का रिटर्न. नेक्स्ट थिंग, अगेन प्रैक्टिकल थिंग.
अगर आपको पता है कि ये क्लाइंट का 44 एडी का कुछ है, ओके, सैलरी भी है, होती है, दोनों करते हैं काम, जॉब भी करते हैं, कुछ 44 एडी का इनकम भी आता है, कुछ इनकम दिखाते भी है, अरे ये मत भर लो, बिजनेस पीजीबीपी का इनकम है, 44 एडी का है, तो चलो फाइन, यू कैन फाइल दिस, सो सैलरी एज पर फॉर्म 16. Okay. Now, why I'm saying so, practical difficulty जो आती है, this is nothing related to income tax, but something that utility has to do with. Okay. This is only for ITR 1 and ITR 4. Okay. अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी का भी इनकम है एंड सैलरी का भी है और आपने ये भर दिया सेक्शन, when you validate your return of income, वो बोलेगा नहीं नहीं ये नहीं भरना था आपको, again you have to delete all this and fill everything in this box. Simple time waste because we were not understanding utility correctly, nothing else. Okay, आपको ITR 1 ही भरना है, ITR 4 ही भरना है, तो अर्लियर वाज बेटर, वो बहुत सिंपल है, जस्ट एक फॉर्म 16 साइड में ये भर लो, 10 मिनट के अंदर रिटर्न आपका फाइल हो जाता है. बट व्हेन यू आर फाइलिंग ITR 2 और ITR 3, एंड कब फाइल होता है ITR 2? अगर हाउस प्रॉपर्टी का कुछ इनकम है अलॉन्ग विद सैलरी, अदर सोर्सेज का है अलॉन्ग विद सैलरी, ITR 3 अगर आपके पास पीजीबीपी है तो, एंड फॉर दिस रीजन यू मस्ट नो कि ITR 1 2 3 4 एग्जैक्टली है क्या. Okay, you do not struggle at that point of time while you fill in the details. Got it? Okay, so this is as simple as this. Now let us go ahead. Self-occupied property. लगता है बहुत सिंपल है, क्लाइंट इंटरेस्ट सर्टिफिकेट देता है, वो हम डालते हैं, सिंपल. बट मेक श्योर टू टेक, इफ द क्लाइंट इज फॉर फर्स्ट टाइम दैट यू आर हैंडलिंग, आपके सिस्टम में जाओ एंड देखो कि वेदर परचेज डीड है क्या, क्लाइंट का शेयर कितना है, एंड वो शेयर हमने इधर डाला है क्या नहीं एग्जैक्टली. क्लाइंट का शेयर 50% ही है एंड आप पूरा का पूरा इंटरेस्ट क्लेम कर रहे हो उसके ऊपर, आगे जाके स्क्रूटनी आई तो देयर विल बी एडिशन एंड पेनल्टी अंडर सेक्शन 270A, अननेसेसरी बिकॉज ऑफ आवर नेग्लिजेंस. क्लाइंट बोलेगा आपको दिया था मैंने, आपको देखना चाहिए था क्या करना है, मैं तो टैक्स भरने के लिए भी रेडी था. ओके, सो मेक श्योर दैट यू सिलेक्ट हियर आपको जो भी करना है, एंड प्रॉपर्टी में शेयर कितना लेना है, and here then you can have details of co-owners that you can put in. One time process, but make sure you do it. Now let us move ahead. 44 AD case, 6% 8% बता होगा आपको अभी. When it's 6%, 5% and less tax transaction होगा तो नहीं वो तो 75 लाख का लिमिट एंड 3 करोड़ का लिमिट कर दिया उन्होंने तब, इफ 5% से नीचे है तो. बट इफ एवरीथिंग इज फ्रॉम बैंक, जितना भी बैंक से रिसिट्स है उसके ऊपर 6% है. यस, एंड 8% इज व्हेन इट्स ऑल इन कैश और अनआइडेंटिफाइड, नहीं बता सकते हम कैसे आया है वो. ओके, सो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू टेक एक्स्ट्रा केयर ऑफ. अगर बैंक से आया दिख रहा है तो एटलीस्ट मेक अ समरी ऑफ इट. या व्हाट हैपेंस इज, अगर आपका प्रॉफिट 7.15% है एंड यू हैव दिस बाइफर्केशन, एंड बाइफर्केशन के हिसाब से कुछ 6% पे है, कुछ 8% पे मिला के 7% आता है, यू वोंट फॉल अंडर 4481 और 4484, ऑडिट नहीं करना पड़ेगा आपको. ओके, वेरी वेरी सिंपल स्मॉल थिंग्स बट दे हैव लार्जर इम्प्लीकेशंस. या सो प्रिजम्पटिव वाला है, आपको टाइम नहीं है आज दैट क्लाइंट्स अकाउंटेंट टू डू इट, मुझे ये करके दो, बट मेक श्योर यू हैव इट विथ यू. Now let us cover one part as well. रिसेट्स हम दिखाते हैं 10 लाख. ठीक, हियर परसेंटेज
परसेंटेज हम चेंज कर सकते हैं बिकॉज 44 एडी में क्या दिया है, मिनिमम परसेंट. ओके, वन थिंग. सेकेंड थिंग, लेट अस गो टू ITR. What you find here, financial particulars of the business or profession. Yeah, where I'm writing 0. दिखा आपको? ये आप इग्नोर करते हो या भरते हो? Yes. Make sure that you file it. बुक्स मेंटेन करते हो तो एग्जैक्टली एज पर बुक्स विदाउट एनी डेविएशन. या 44 एडी के केस में ऐसा नहीं होता हमेशा दैट वी डू नॉट हैव बुक्स ऑफ अकाउंट्स विद अस, वी ओनली जस्ट टेक बेनिफिट्स ऑफ दैट प्रोविजन, कि हमको सब दिखाना नहीं पड़े, राइट. सो मेक श्योर दैट यू हैव सन्ड्री डेटर्स, क्रेडिटर्स, स्टॉक इन ट्रेड, कैश बैलेंस एग्जैक्ट दिखाओ. आपके पास बुक्स नहीं है, चलो ठीक है, एटलीस्ट आस्क द क्लाइंट कि एस्टिमेट बेसिस पे हमें ये दे दो कि कैश कितनी होगी आपके पास, डेटर्स क्रेडिटर्स कितना है. स्टॉक इज एसेंशियल बिकॉज स्टॉक, कल कोई सर्वे हुआ आपके ऊपर एंड स्टॉक आपने 0 दिखाया, दैट ऑफिसर इज बाउंड टू से कि आपका स्टॉक 0 था, अभी इतना कैसे आया, दैट इज अनआइडेंटिफाइड स्टॉक, चलो डिक्लेयर करो पूरा इनकम में. इवन दो इट्स अ 44 एडी रिटर्न, you make sure that you file these financial particulars very very sincerely. Okay, crux of 44 AD is not selecting that section but these 4 particulars. Okay, so PGBP is simple enough. जो भी ITR में आप डालते हो, that what gets auto populated here, and then you have to make adjustments of depreciation etc and then ensure that आपका जो प्रॉफिट है वो आता है. Okay, depreciation as per income tax and depreciation as per books of accounts आता है. कुछ पहले से गड़बड़ हुई है तो वो डिफरेंस हमेशा रहेगा. And if it's not a company, if it's not a company and everything is in place, there must not be any difference between depreciation as per books of accounts and depreciation as per income tax, because generally it's a practice that we take depreciation as per income tax books में. कंपनी है तो there will be a difference and there has to be a difference. कंपनी का कंपनी के हिसाब से अलग आता है, right? Long term capital gains, इसमें भी there is one thing, value as per stamp valuation authority section 50C. Take care that you enter this perfect. क्यों? This has implications on your scrutiny assessment as well. ये वैल्यू अपने गलती से भी थोड़ी ज्यादा डाल दी, there is bound 143(1) coming in, there is bound, there is assessment happening. Yeah, 50C का you know the rules or you know the provision. Yes or no? Market price, whichever is higher. Yes, stamp duty value or transaction value, whichever is higher. Okay, so if stamp duty value for the purpose of calculation of stamp duty is 50 lakh rupees and you are transacting at 45 lakh rupees, for purpose of section, for the purpose of computation of long term capital gain, sale consideration will be 50 lakhs. One thing. Second thing, for a person who is buying it, it will be treated as gift under section 56 to 10, and जो difference है वो उसके हाथ में भी tax होगा. Okay, so implication is not on you, it's on the other person as well. There is double taxation here, but it's legal. There are no opposite judgments की डबल टैक्सेशन है तो नहीं होना चाहिए. उसको गिफ्ट मिला है, उसके हाथ में इनकम है, टैक्स होगी. आपके इस पे डिम्ड इनकम है वो टैक्स होगा. So this value is also very very essential that you look carefully and put it. ठीक है, 115 BSc तो अभी हमने डिस्कस किया है, नथिंग मेजर इन दैट. 234A BC जो भी आता है, अगर आपको टाइम है तो एक बार जस्ट अमाउंट बढ़ी है तो एक बार जस्ट देख लो कैलकुलेशन कैसे किया है लोगों ने. Why? Because ये कैलकुलेशन सही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स. डिपार्टमेंट का कभी गलत हुआ तो यू मस्ट हैव आंसर इन प्लेस. ओके, इफ द सेल्फ असेसमेंट इज पेड इन इंस्टॉलमेंट्स तो भी इशू आता है. देन यू हैव टू मेक श्योर कि आप इंटरेस्ट वो एग्जैक्टली किधर दिखाते हो, दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ, अदरवाइज देयर इज अ डिमांड एट डिपार्टमेंट इश्यूज.
So you have to file a rectified return of income at that point of time again. Yeah. ओके, कंपटीशन शीट पे इंडिविजुअल एचएफ के कुछ डाउट्स है, कुछ प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आई थी आपको कभी while you're doing it? Okay, just we'll proceed to ITR and then probably we'll just have a glance at ITR 7. ठीक है, ITR 6, ITR 5, ITR 4, 3 and 2. There is no much of a difference. जो हमने अभी देखा है वो सब उसमें कवर हो जाता है. Okay, so even if you select individual, if you select HUF, if you select LLP, BOI, firm, same thing that you have to take care of. कुछ मेजर नहीं है. Firm के केस में there is one thing that I'll show you and then we'll move to ITR 7. So I think we have 10 minutes or so. Yeah, 5 minutes में we'll cover ITR 7. In couple of minutes we'll cover this, couple of minutes firm का, and then we can end with your questions. Okay. इसमें ये इंपॉर्टेंट, बैंक अकाउंट फॉर रिफंड जो है, मेक श्योर भाई क्लाइंट को उसमें रिफंड चाहिए. या बैंक अकाउंट जो आप डालते हो, मेक श्योर दैट इट्स वैलिडेटेड ऑन द इनकम टैक्स साइट. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. ठीक है. नेचर ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन डाल दो सही से, एग्जैक्टली क्या नेचर है, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट यू आर डिक्लेयरिंग टू द डिपार्टमेंट कि मेरा ये नेचर ऑफ बिजनेस है. अगर आपने इसमें होलसेल डाल दिया ना, आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, देयर मे बी सम इम्प्लीकेशंस. आज तक आई हैव नॉट सीन अ केस, बट देयर मे बी. ठीक है. टर्नओवर ग्रॉस रिपोर्टेड इन जीएसटीआर. टेक अ रिपोर्ट. इवन इफ यू हैव टैली, टेक अ रिपोर्ट कि जीएसटीआर में कितना गया है, मैच इट टू योर टैली एंड देन फाइल इट. इफ देयर इज वेरिएशन, देयर विल बी नोटिसेस फ्रॉम टू अथॉरिटीज, एक तो जीएसटी एंड एक तो इनकम टैक्स. ओके. बिजनेस प्रोफेशन स्टार्ट डेट इतना इंपॉर्टेंट लगता नहीं है, बट अभी आपका बिजनेस ये ईयर में स्टार्ट हुआ है, आपको एडवांस टैक्स हर साल भरना पड़ता है, राइट? एडवांस टैक्स के लिए इफ यू से कि मेरा बिजनेस 1 अगस्त से चालू हुआ था, आपको 15 जून का एडवांस टैक्स भरना पड़ेगा? नहीं. बट इनको नहीं समझता ना भाई. विनमैन विल नो व्हेन यू स्टार्टेड योर बिजनेस. तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव बिजनेस प्रोफेशन स्टार्ट डेट हियर, सो दैट आपका इंटरेस्ट 234 बी एंड सी का, एंड मोस्ट पर्टिकुलरली 234 सी का जितना आएगा उतना ही आएगा. ओके, दैट डजंट इम्पैक्ट योर इंटरेस्ट अननेसेसरीली. 44 AD ब्लॉक पीरियड डाल दो, बिकॉज you know that once you move out of 44 AD, 5 years you cannot come back again, you have to audit, etc. So to keep a track, this is internal tracker that Winman has given. Maybe Genius would have given this, I'm not very sure, but take look and at least keep a track of this. Okay. So I think this is it with normal return of income. फॉर्म में व्हाट यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो रेम्यूनरेशन है, वो रेम्यूनरेशन जो आप कंपटीशन में डालते हैं, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, वो आप एग्जैक्टली इसमें भी डाल दो. इंटरेस्ट रेट अगर आप दे रहे हो कुछ इंटरेस्ट रेट ऑन कैपिटल, तो इसमें डाल दो. रेम्यूनरेशन हैज टू बी एग्जैक्ट. अगर वो मिसमैच हुआ तो देयर इज अगेन नोटिस. दैट इज द ओनली थिंग दैट आई हैड टू टेल. हाउ मेनी ऑफ यू हैव फाइल्ड ITR 7 अभी तक? यू हैव फाइल्ड. ओके, एनीवन एल्स नहीं किया होगा? ITR 7 में ITR is very important. That will have a just have an academic look at. When you do it for all practical purposes, आपको थोड़ा थोड़ा उसके implications समझ में आएंगे.
But what is important here is details of trustees. You have to ensure that you have details of trustees. There is one change report. ठीक है, वो आप ले लो क्लाइंट से और उसके हिसाब से ट्रस्टीज के डिटेल्स डाल दो, बिकॉज यू हैव टू हैव डिटेल्स ऑफ ईच एंड एवरी ट्रस्टी. दिस इज अमेंडमेंट रिसेंटली. पहले हम एक ही ट्रस्टी का डिटेल डाल देते हु यूज्ड टू बी वेरीफायर एंड थिंग्स यूज्ड टू वर्क. बट अभी यू हैव टू हैव डिटेल्स ऑफ एवरी ट्रस्टी. ओके, एक्युमुलेशन बताया आपको क्या होता है ट्रस्ट में. ओके, टू मेक इट सिंपल, 100 रुपीज का इनकम है. एज पर सेक्शन 11, 12, 85 रुपीज आपको स्पेंड करने हैं. ये तो पढ़ा होगा ना आईपीसीसी में, या ऑप्शन में डाला था. ओके, सो जस्ट व्हेन यू डू इट यू विल जस्ट रिमेंबर इट व्हाट आई हैव सेड. ठीक है, अगर क्या भी ना होगा तो 15 रुपीज यू कैन एक्यूमुलेट फ्रीली. 85 से भी कम अगर आपका एक्सपेंडिचर हुआ, ओके सपोज 70 हुआ, तो आगे का जो 15 है, ओके 75 लेते हैं, इजी जाएगा. जो आगे का 10 है दैट विल बी टैक्स्ड. तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, चलो आप टैक्स नहीं भरो, यू कैन जस्ट से इट कि आप you have these funds for some long term project. 5 साल के लिए you can use that. Okay, maximum limit is 5 years and you can accumulate under section 11(2). How much you accumulate, you have to spend it in next 5 years. So this is that sheet where you have this accumulation ka details. Yeah, Excel here basically, nothing else, like the base is Excel. Yeah, so this is kind of an Excel sheet that you have. So here details are very, very pertinent to put in. They have to be verified as per last return as well. Anything that can be quickly covered that I want to here is this thing. This is something very different than your normal return of income. Yeah, donations आपके आते हैं, other income आती है, expenditure आता है, revenue and capital expenditure. For the purpose of application, your revenue expenditure as well as capital expenditure is taken in consideration. Okay, so you have to also have that details. So once you have practical knowledge, एक बार आपके पास केस आई कोई ट्रस्ट की, when your sir gives you or ma'am gives you, at that point of time you can delve into it, but just make sure that at least you look at the form, because थोड़ा सा complicated form है काफी interesting चीज. Okay, capital expenditure, revenue expenditure is something that you have to consider. There is one corpus fund as well that is basically created. Corpus is which is not taxable in the hands of firm. Okay, so corpus fund के details भी आपको डालने पड़ेंगे very carefully, because if you spend anything from corpus fund, unless and until you deposit that corpus back into the trust, that is not an application of income. मतलब 10 लाख का कॉर्पस था, मैंने 5 लाख उसमें से स्पेंड कर दिए, तो 5 लाख मेरा एप्लीकेशन होना चाहिए. दैट इज इट्स माई एक्सपेंडिचर. फॉर द पर्पज ऑफ ट्रस्ट इट्स नॉट अ एक्सपेंडिचर. यू कैन नॉट टेक दैट इन दैट 85% वाला थिंग. ओके, सो ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेशंस है. सो एवरीथिंग इज इन रिटर्न ऑफ इनकम. There are a lot of validations that you have to have, but to be very, very like keep things simple here and to make you aware of the intensity of this. एक ट्रस्ट का अगर आपके पास रिटर्न है, कोई ये साल भरा हुआ असेसमेंट है 23-24, ऑफिस में जाओ एंड देख लो वो रिटर्न, या टेक द फाइनेंशियल्स इन फ्रंट ऑफ यू एंड एग्जैक्टली कैसे किया है, बिकॉज उसका एक अलग लेक्चर 2 घंटे का मैंने दिया था at one branch. Okay, so that's so complicated. So I won't go into intricacies of everything, but yes. Okay. One last thing that I have to tell you कि I won't open it here अभी, but एक foreign assets का declaration आपको देना पड़ता है. याद है आपको? या एक बार दिखाओ इधर.
Okay, having foreign assets and income or signing authority in foreign account. As per Black Money Act जो है, if you fail to disclose any detail here, there is direct daily penalty. ठीक है? So there was a recent case. Someone asked me कि ये केस में क्या कर सकते हैं. That assessee failed to disclose some assets. अभी तक उसकी penalty that they have calculated is rupees 80 lakh rupees. Only failure to disclose these things. And कुछ implication नहीं है इसका. Tax में कुछ implication आएगा? नहीं आएगा. But you have to disclose this. So this is again very important. Okay. So I think these were a few points that I wanted to tell. If there's anything that you want to ask, कुछ queries है, you can ask, or else we can end the session. Any queries? Okay, cool. So we can end the session. Thank you so much, sir. It was such a well-delivered session. Now, I would like to call Mr. Suhas Sawant, Joint Treasurer of Pune Vikasa, to give vote of thanks. Good morning, all. First of all, special thanks to everyone for attending the session in this early morning and for your patience listening. I would like to extend warm regards to CA Anup Shaha sir for accepting our request for this session and giving such an informative session on the topic precautions to be taken while filing the ITR returns. He has covered all the possible aspects of ITR. Thank you, sir, for your knowledge sharing. I'm sure this will surely be helpful for the students. Special appreciation to Sir Rajesh Agrawal, sir, our immediate past chairman of Pune branch of WRC of ICA, for making his presence over here and coming with such an amazing idea of this series of income tax key Pathshala. Thank you to the branch staff, Manoj sir, for making the necessary arrangement for this session. And thanks to the Vikasa team for organizing this session. Thanks to our MOC, Shreyash. Thank you, all of you. I would request everyone to stand up for the national anthem. Okay. Yes. बोलना. नको?